welcomes you in News Moment English. Fourth phase of election in West Bengal remained violent. 76.16% voting has been reported till 5 pm. 4 persons are reported killed in firing. CISF opened fire outside a polling booth in Coach Bihar. West Bengal CM Mamata Banerjee commented, "We have been saying that the Home Ministry has been influencing the central forces and our worst fears have come true today. They have killed 4 people." On the other hand, PM Narendra Modi expressed grief over the incident and said, at a rally at Siliguri, "What happened in Coach Bihar is very saddening. My sympathies are with the families of those who died. I condole their demise. Didi and her goons are perturbed seeing the people's support for BJP. She has stooped to this level as she can see her chair slipping away." CISF have said, preliminary information is that CISF and other security forces were attacked by a mob. First, they were attacked around 9:40 am and again an hour later. The polling booth was attacked. CISF reported to firing in retaliation. CCTV recording and other evidence which are available will be shared with the Election Commission and poll officer. Whatever may be the case, both BJP and TMC are trying to capture other 4 phases of election which are more crucial to gain strength and majority. स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स. फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट. According to Vikas Prasad from Purulia, members of a voluntary organization called Save Ayodhya Hills have come forward to keep the Ayodhya mountain free from pollution. According to the information, members of the voluntary organization called Save Ayodhya Hills, some are school and college students, some are employees, some are educated, unemployed youth. But somewhere in this purpose, they are bound by same sutra. Each of them has the same dream, that is, Ayodhya of Purulia should be pollution free, where forest and wildlife will survive according to the laws of nature. With this dream, about a month ago, he extinguished the fire, risking his life to extinguish the fire with 2 days of relentless effort to save the Ayodhya hills from the flames. That day, he saw the from the hills of Ayodhya covered with waste. Greater than the tireless effort of 3 to 4 days, ignoring the hot April sun without wasting any time at all places, including the Mayur Hills of Ayodhya, Sangmar Lake, Bamani Waterfall, Upper Dam Picnic Spot, Sitakud area, and the area around the campsite, tried to clean containments like plastic bottles, liquor bottles, glasses, thermocol into 50 plastic bags. One of the members of the voluntary organization, Akshay Bhagat, Amit Kumar and Durga Das Mahanti, said that they would undertake such cleanliness operation on the hills in future. Prominent people, including members of Ayodhya Hills organization and local residents of Ayodhya Hills, said that the local bloc and police administration needed to play a positive role in keeping the Ayodhya Hills free from pollution. The PSPP management of Ayodhya Hills, even hotels, lodges and shops on the hills which are using plastic openly, cannot abdicate this responsibility. Bani block. Mezandi under Panuria Gram Panchayat. A few days ago, we talked about setting fires in forest from the forest department to the night watchman and the deputy chief of the panchayat. The animals are fleeing from the village. After the forest fire, these 3 big turtles were burned to ashes. Manoj Sharma reports from Barabani. Let us hear what the people related to forest says. এটা কেন হচ্ছে এরকম ঘটনা বারবার? ভাড়া বলতে হচ্ছে এটা ধরুন জঙ্গল তো এখন রোদে গরম হয়ে গিয়েছে, আর মাটি গরম হয়ে গেছে, বৃষ্টি হয়নি এবছর। বৃষ্টি হলে একটু হলে কমে যাবে আশা করছি, মাটি ভিজবে। আর এই মোল টোল খুলে দিয়ে যা করছে, মোল মানে মোল পুরো পরিষ্কার করলে জায়গাটা, তাও মোলটা পরে তাও পুরায়। আর কিছু ছেলে মজাও করছে, আগুন লাগিয়ে দেখছে, ভালো লাগছে এটা এরকম। মানে এমনি জমি মাফিয়া বা কয়লার সম্প্রসারণ এরকম কোনো ব্যাপার নেই? না না, এরকম কারণ এখানে প্রাইভেট সংস্থা অনেকগুলো এসছে, তারাও চেষ্টা করছে যে অধিগ্রহণ করতে পারবো কুড়িয়ে দিনে। ওই ভাবে এইদিকে এইটা নেবে না, এই দিকটা দিগল পারি পানুরিয়া মৌজা।
তো আপনাদের এটা কোন মৌজার মধ্যে পড়ে? ওইটা অলিগঞ্জ মৌজা যেটা দেখে নেয়। তার মানে এমনি নাশকতার কোনো চিহ্ন দেখছেন, কারণ গাছের এখানে অভিযোগ- দাওয়ান লাগার কিন্তু কোনো ঘটনা নেই। থানায় অভিযোগ করেছেন? হবে নামটা সুমন্ত দাস। কোন জায়গায় আসছেন, কোন চ্যানেল? মোটামুটি স্যার রাত এই দুপুর মোটামুটি 11টা বাজে। দাদা তো জঙ্গলেই ছিল, দিয়ে বাড়ি থেকে দেখছি মানে খুব ধুমো হচ্ছে। বাড়ি থেকে দেখলাম খুব ধুমো হচ্ছে, দিয়ে গ্রামের লোককে সবাইকে বললাম বনে আগুন লেগেছে। গ্রামের লোক সবাই দৌড়ে এসছে, এসে পরে দেখছে পুরো ধাও ধাও করে আগুন জ্বলছে। এতটা আগুন তো নেভানো সম্ভব নয়। তারপরে যখন আগুন পুরা মনে করো তোমার যে কমে গিয়েছিল, তারপরে জলের গাড়ি এলো। দমকল এসেছিল? না, দমকল আসে নাই, ট্যাঙ্কার এসেছিলো। ট্যাঙ্কার দিয়ে আবার নিমানো হয়েছে। তো এরকম কি প্রায় হয় না প্রায় হয়। কারা লাগায়? এটা তো জানা নাই, জানতে না পারলে তো কিছু বলার নেই। কি নাম তোমার? আমার নাম সামদেব সিং। তুমি কি এখানে দেখাশোনা করো? দেখাশোনা দাদা করে। দাদার কি নাম? रामदेव सिंह। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th students. Get up to 50% scholarship for the session 2021 to 22. Durgapur phone number 9434822278. 10th April 2021, Saturday. A special effort by Burnpur Thekadar Mazdoor Sangh of Bharatiya Mazdoor Sangh protested against the immoral injustice of contract workers working in the expert hostel and CEO office, and the protest movement was conducted. The contract workers were seated since the corona period, not citing cost cutting. ESI facility was not provided properly. They were provided PF amount while working, and the spot was cancelled and they were put to work. All these people were associated with other union. They did not work. When they tried to go to BMS and to keep their demands forward, under this BMS took a quick action and wrote a letter to the management asking the answer, and if the answer did not come right, then the BMS labor made up their mind to go to the court. संघ का ये मजदूर संघ का प्रेसिडेंट हूँ, और ये जो आप आदमी लोग आज देख रहे हैं, ये लोग हमारा पास आए थे 2 दिन पहले। ये लोग कई एक साल से ये लोग धरना में हैं। 1 साल से धरना में है, और ये लोगों का ये कोविड का टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल था उसका भी ब्रेक करके मैनेजमेंट इसको बिठा दिया गया। ये लोग बार बार कोशिश किया, नहीं हुआ। बाद में ये लोग आज 2 दिन पहले BMS को ये केस हैंडओवर दिया, और BMS इसके लिए मैनेजमेंट को और RC रीजनल ऑफ ये लेबर कमीशन में RLC में चिट्ठी देगा, वो मैनेजमेंट से भी बात करेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये नोटिस था उसको वायलेट किया है। ये नहीं चलेगा, और इन लोगों का 18 महीना का पेमेंट, 18 महीना का बोनस, ऊपर से ये लोग विदाउट नोटिस में नहीं किया। इसके लिए BMS कड़ी से कड़ी आंदोलन करेगा। The workers have demanded that they have been removed from work for the last 10 months, citing corona. While the government had instructed and requested that no one would be put in corona period or corporate organization, and a circular was issued to the manager. In this pledge, the employees' employment was assured to be retained. Today, with the contract workers, Sangeet Banerjee of Bharatiya Mazdoor Sangh, and along with them Shambhuji, Ravi Rajak, Rajendra Yadav, and several Indian Steel Employees Union delegations were also standing strongly. তো কি গরিব মানুষের পেটে লাথ মেরে ম্যানেজমেন্ট তো নিজের এসি গাড়ি, নিজের ফেসিলিটি তো কাট করে করেনি, বা নিজের পেমেন্ট তো কম করেনি। 8,000 টাকা তো এরা পায়, ওদের তো 1 লাখ টাকা, যে আমাদের তো 1 লাখ টাকা কম করে দাও, আমাদের কম করে দাও, ওদের তো 50,000 টাকা কম করে দিলেও হয়ে যাবে। এদের 8,000 টাকা কেটে কোম্পানি খুব বেশি লাভ করেনি। ওদের একটাও ফেসিলিটি, ম্যানেজমেন্টের একটাও ফেসিলিটি কম হয়েছে? আপনারা দেখুন গিয়ে, প্রত্যেকজন দেখে দিয়েছে যে ম্যানেজমেন্টের কোনো ফেসিলিটি নাই, বরঞ্চ কোভিডের সময় ওরা আরও বেশি করে ফেসিলিটি অ্যাভেল করেছে, কিন্তু এই গরিব মানুষদের জন্য শুধু ফেসিলিটি কেটেছে, আর এদের মানে কোভিডের নামে, কস্ট কাটিংয়ের নামে বসিয়ে দিয়েছে। এতে কোম্পানি কতটুকু প্রফিট করেছে আমাকে হিসেব করে বলুক। आप लोग इस आगे आंदोलन को बढ़ाने के लिए और धरना को बढ़ाने के लिए क्या रूपरेखा तय किए हुए हैं? नहीं, आज देखिए ये लोग, এরা প্রথম অনেক দিন ধরে ধর্না করছিল। BMS ইউনিয়নকে আজকে ওরা ম্যাটারটা করেছে, ধর্না আজকের থেকে ওরা সমাপ্ত করবে। এরপর ইউনিয়ন দেখবে, যদি আগে এরা না মানে, ম্যানেজমেন্ট যদি না মানে, তো আমরা আরও বড় আন্দোলন করব। দরকার পড়লে আমরা MD অফিসের সামনে গিয়ে এদের পুরো পরিবারকে নিয়ে গিয়ে ওখানে গিয়ে আমরা ধর্না দেবো, কিন্তু এদেরকে নিতে হবেই।
যেখানেই হোক এর দিকে পুনরায় বহাল করতে হবে। ठीक है संजीत जी, बी प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट सेल BMS, है ना, धन्यवाद आपका। आप लोग का क्या समस्या लेके आप बैठे हुए हैं यहाँ पे धरना? आप लोग दादा हम लोगों का ये है कि हम लोग आज 1 साल होने चला है, सेल मैनेजमेंट में हम लोग काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, तो जिसके लेकर के कुछ महीना हम लोगों का पेमेंट आगे पीछे हुआ था, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों का चालू कॉन्ट्रैक्ट रनिंग टेंडर को बंद कर दिया गया और हम लोगों को बैठा दिया गया। तो इसका क्या कारण रहा है ये मैनेजमेंट ही बता पाएगी। और हम लोग बहुत जगह इसके लेकर के गुहार लगाए, मैनेजमेंट से भी बोले, हम लोग जाकर के बताए हैं उनको कि सर हम लोग गरीब आदमी ये कोरोना काल में कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे सर। हम लोग हाथ जोड़ पैर सब जोड़ के उन लोगों से निवेदन किए हैं, बोले हैं, कुछ इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं। और हम लोगों को अचानक सा सडनली कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हम लोगों को जाना गया कि हम लोगों को बैठाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग कितना लोग हैं जो कि इस बार कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बैठाया हुआ है यहाँ पे? पहले तो हम लोग MD ऑफिस टी काउंटर में हम लोगों का 6 आदमी था और एक CO बंगला में थे, तो और यहाँ पे हम लोग हाउस कीपिंग और बाहर का जो भी काम है हल्का फुल्का हम लोग वो करते थे, जिसमें कुकिंग भी था। ये सब का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिला हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग वो काम कर रहे थे। करते हुए इसी अंतर्गत हम लोगों का हॉस्टल में रनिंग टेंडर में क्या है कि रहता था, लोग रहते हुए हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दिया गया। अभी आप लोग का जो कोरोना के समय से जो सिचुएशन खराब हुआ है, तो आप लोग का वर्कर लोग अभी कैसे गुजारा चल रहा है? उन लोग का कुछ व्यवस्था कुछ हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। हम लोग बार बार आकर के यहाँ 9 महीना 10 महीना होने चला है, यहाँ आकर के यही आस में बैठते हैं कि कोई सेल मैनेजमेंट कोई भी आकर के हम लोगों को देखे, हम लोग कैसे समझ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कोई पूछने तक नहीं आता है। हम लोग पर अपना आकर के यहाँ देखते हैं, अपना चले जाते हैं। आप कोई लोग रास्ता अभी तक नहीं। आप लोग वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ सेल के मैनेजमेंट से किसी से आपकी मुलाकात हुई अभी तक? हम लोग गए थे EDPN शहर के पास में, तो कोरोना काल का हवाला दे करके हम लोगों को बोला गया कि अभी कोरोना काल में आप लोगों को सडनली कुछ बात नहीं हो पाएगा, नहीं कुछ किया जाएगा, आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है। उसके अंतर्गत हम लोगों को प्रदीप कुमार सर हम लोग थे, उनसे हम लोग बात किए हैं 2 बार 3 बार, तो वो लोग भी आश्वासन दिए थे कि नहीं होगा, पर हुआ कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ठीक है ना, आप लोग ठीक है। Violence is also started with the 4th phase of West Bengal Assembly elections. According to the information, Ashwin Kumar, the in charge of Kishanganj Town Police Station bordering Bihar, Uttar Dinajpur, was killed during raids in Panjipara at around 4:30 am on Saturday. The dead body of Ashwini Kumar, in charge of Kishanganj Town Station, has been brought to Islampur Hospital for post-mortem. Kishanganj SP Kumar Ashish, including SDPO, had reached a large number of police forces. It was also told that Kishanganj Town Police Station officer in charge, Ashwini Kumar, has been killed by criminals by lynching. The incident is from Pantapada village in Panjipara. They raided the bike theft gang's hideout. Meanwhile, the police clashed with the criminals and a mob of criminals captured SHO Ashwini Kumar and made him his victim. At the same time, IG Suresh Prasad Chaudhary of Purnia area reached Islampur Hospital on the information of the incident. Confirming the incident, the IG said that on a notice near the Panjipara police station area of Bengal, police bike thieves rushed to raid the whereabouts of the gang, during which the mob killed him. Ashwini Kumar served as the circle inspector of the 1st Thakurganj police station in charge of Kishanganj Town police station. He has been known as a fiery and fearless police officer. Seeing his bravery and boldness, Kishanganj SP Kumar Ashish made him the president of the Kashiganj town recently. A wave of mourning and outrage is being witnessed in the police department of the entire district of Bihar, Kishanganj, regarding this incident. Salanpur, Trinamool Congress Hindi Cell District President Manoj Kumar Yadav, in view of assembly elections, held a meeting at the party office in Bajem Bihari to connect the Hindi-speaking people under the leadership of SB Pandey and block president of Salanpur. Hindi-speaking people of the area, including members of all Hindi cells, took part in the meeting. In the meeting, all the members were asked to promote Trinamool Congress in their respective areas from house to house and in Nukkad Sabha as well. In unison, the Trinamool Congress candidate from Barabani supported Vidhan Upadhyay with an overwhelming majority and resolved to form the Trinamool Congress government in the state. Ashutosh Tiwari, D. Bablu, Dhananjay Singh, Bharat Giri, Manu Siddiqui, Pavan Srivastava and other Hindi-speaking people were present in the meeting.
Asansol TMS State Secretary V. Shivdarshan Dasu on Saturday attacked the BJP vigorously by holding a press conference. Dasu said that whatever BJP leaders are coming from other states in Bengal, everyone should be corona examined or quarantined. Demanding this from the Election Commission, Dasu advised the BJP not to dream the beautiful dreams of Mungeri Lal. He said that in Bengal, Modi ji is sending an army of Hijras to fight with Didi. Tell me about your relationship with gangster Vikas Dubey. Jitendra Tiwari today became a monk by joining BJP. Who got the fake cases done on Chiranjan Chattopadhyay, accusing him of extorting crores of rupees every month while staying in TMC. He claimed that TMC government is coming back to power in Bengal, after which these BJP leaders will not meet even after searching. However, an official statement has not yet come from the BJP. BJP candidate Krishnendu Mukherjee said that non-parliamentary language should not be used. Asansol, accused of destroying the idols of two temples in Asansol and attempting to smash objects. Two incidents occurred on Friday night in Kalapahari of Asansol South Police Station and Kalyanpur housing area of Asansol North Police Station. Seeing the condition of the temple, tension spread in the area on Saturday morning. The police went to both the areas as soon as the news of the incident was received. The police has started an investigation into the incident. Meanwhile, two BJP candidates from South Asansol and North Asansol Assembly constituencies, Agnimitra Pal, Krishnendu Mukherjee, went to the area after learning about the incident, and with this, a fierce battle has started regarding the incident before the elections. A war of words broke out between Trinamool Congress State Secretary V. Shivdarshan alias Dasu and two BJP candidates. थोड़ा ले लिया नीचे जितना टुकड़ा कितना बजे बोला? रात को बोला 12-1 बजे का। भाई से सब कुछ लेगा? भाई जी तो यहीं है। ताला कौन दे बोला? इसमें लाइट जला ना सब आदमी उड़ी The 5 members of Asansol Municipal Corporation in Raniganj Town Block of Raniganj Assembly. Tapas Banerjee, the Trinamool Congress candidate in Raniganj Assembly constituency, has been appealing to the Trinamool Congress for support in the elections at various booths in Ronai area of the ward. রানীগঞ্জ উন্নয়নের স্বার্থে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরে কাছের মানুষ তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরে কাছের মানুষ তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। রানীগঞ্জ উন্নয়নের স্বার্থে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরে মা বোনেদের স্বার্থে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরে তাপস ব্যানার্জি के जोड़ा फुल चिन्ह वोट दिन। अरे उन्नयনের স্বার্থে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। কাছের মানুষ তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। ভোট দেবেন কোনখানে? ভোট দেবেন কোনখানে? তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করতে রানীগঞ্জে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। রানীগঞ্জে বিরোধী শক্তিকে কাছের মানুষ তাপস ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। মানুষ তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। রানীগঞ্জবাসী তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন।
Farmers have intensified their movement. In western Uttar Pradesh, they have blocked the Delhi Meerut Expressway at Dasna for 24 hours from this morning. The blockade began at 8 am on Saturday and will last till 8 am on Sunday. It has been more than 4 months since the protesters began the protest at Delhi's border, and the government is not even showing basic humanity towards the protesters, BKU state spokesperson Dharmendra Malik said. Only emergency vehicles were allowed. Farmers blocked the highway to reiterate their demand of a rollback of the 3 contentious laws. It is worth mentioning in this regard that the Sanयुkt Kisan Morcha, an umbrella body of the protesting farmers' union spearheading the agitation against the 3 laws, gave a call for a 24-hour blockade of the Eastern Peripheral Expressway on Friday. Farmers are demanding a repeal of the 3 farm laws enacted by the centre in September last year, while the centre says the new farm law will free farmers from middlemen, giving them more options to sell their crops. The protesting farmers, however, say the laws will weaken the minimum support price system and leave them at the mercy of big corporates. Running of Howrah-Bikaner weekly superfast special Asansol. To clear the rush of passengers, Eastern Railway will run weekly superfast special train between Howrah and Bikaner. 02371 Howrah. Bikaner weekly special will leave Howrah on every Monday at 8:15 hours from 12/4/2021 to 28/6/2021 and will reach Bikaner at 17:55 hours. On the next day, the train will arrive Asansol at 10:43 hours and will depart at 10:48 hours on the same day. 02372 Bikaner Howrah weekly special will leave Bikaner on every Thursday at 6:30 hours from 15/4/2021 to 1/7/2021 and will reach Howrah at 6:50 hours on the next day. The train will arrive Asansol at 13:07 hours and will depart at 13:17 hours on the next day. There are 2 spiritual dangers in not owning a farm. One is the danger of supposing that breakfast comes from the grocery and the other that heat comes from the furnace.